গাইস, তো এবার হয়তো তোমরা আমাকে সাথে ব্লগিং করতে দেখেছো আজ পর্যন্ত। ফুড ব্লগিং টু বি স্পেশাল। কোনোদিন পড়াতে দেখোনি তো? আচ্ছা, পড়াতেও দেখে নাও। আজ আমি পড়াবো জাভা ফর ক্লাস 9 and 10th ICSE। ঠিক আছে, তো কি হয়, জাভা একটা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তো সবার আগে তোমাদের বুঝতে হবে যে হোয়াট ইজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজিং আর হোয়াট ইজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি হয়? প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যার সাথে আমরা কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে পারি। ঠিক আছে, যার সাথে আমরা কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে পারি। ঠিক আছে, এমন একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে এমন একটা ভাষা যার দ্বারা আমরা কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে পারি। ঠিক আছে, যার দ্বারা আমরা ভালো কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে পারি, जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर से बात कर सकते हैं बात कर सकते हैं। मेरा हिंदी बहुत खराब है, फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कॉन्सेप्ट समझ लेना, दैट्स इट। कर सकते हैं, कर थोड़ा देख लेना है, कर सकते, भूल चूक माफ, कर सकते हैं, कर सकते, maybe like this, and I am extremely sorry for this. I am not supposed to tell it like this, but I am extremely sorry, but समझ लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एमन एक भाषा या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा एक लैंग्वेज है या फिर ऐसा एक भाषा है जिसके जरिए, जिससे যার সাহায্যে আমরা কম্পিউটারের সাথে কথা বলতে পারি। We can talk with a computer, we can talk, we can converse, or we can give commands, to a computer, give commands to a computer. I hope this is clear to you all, guys. Now, question comes that what is a programming language supposed to do, right? What is a programming learn is to give commands, to give commands to it, ঠিক আছে। প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হয়েছিল it was invented or it was created to give commands, right? To give commands. So 1980 में एक शख्स था, 1980 में, in the late 1980s there was a man in Ireland named James A. Gosling. This man thought to make a programming language, and he made it and released it in the market. He made it and released in market in 23rd May 1995, which was Java, initially named Oak. Oak named था क्योंकि उनका जो ऑफिस था, in front of his office there was a tree, oak tree, due to which he gave its name as Oak. Later Oak became Java. Java is a case sensitive language. Before that I have to understand what are the types of programming languages are there. The programming language consists of two parts. One is high level language, one is low level language. I hope this is clear to you all. We will only learn about OOP. Other statements about POP, procedure oriented programming language, SOP, and etc. are given in your books, which are not at all important. Still learn it, because everything in the book should be learned, but don't learn it very seriously. Mainly learn what is OOP. Okay, this POP, procedure oriented programming language, all this comes as a full form, or it should come that what is the difference between POP and SOP, or what is the difference between SOP or POP, or what is the similarities between SOP and OOP. Like this questions could come, so read the definitions carefully. Otherwise, jumping back to Java. Now, Java is an object oriented programming language. It is an object oriented programming language. Ooh. This is an OOP. OOP means, see, object oriented programming. Okay, what is an object? Object could be anything. Object could be a chair, object could be at this board, this marker, object could be anything. So
Object oriented means object oriented means object oriented means since this is the object, just think that this is the object, and orientation means a object के घिरे, basing this object or keeping this object as the main class, as the main thing of the program, doing executing the program as an important part, as the integral part, making back that here in Java we are talking about Java, right? Just a moment. We are talking about Java. Java is object-oriented programming, I have told, and what is an object, which that I have also told. Now, this Java is implemented of 5 main objects. Not only Java, this object-oriented programming (OOP) consists of 5 children. What are the 5 children of OOP? OOP. OOP consists of 5 children. 1. Data abstraction. Data abstraction. Inheritance. Data abstraction, inheritance, and others. For example, polymorphism. Encapsulation. Which so these are the main These are the main parts of an object-oriented programming language. Have I missed something? I have missed one point here. Comment it down. Talk about data abstraction. Data abstraction. Without knowing its, no knowing its background details. Without knowing its background details. So, what is this? Is that savings of data? For example, a camera is clicking a photo. Camera is clicking a photo, but the camera don't know about the background details. This is data abstraction. This all you have to just ratta maar lena ek baar. These are all not important for class 9th and 10th perspective. Now comes inheritance. What is inheritance? Inheritance means that you are inheriting something. For example, from a if this is your father's, think that this is your land. This is your land. Okay, this is your land which is of 110 acres. Okay, 110 acres. This is your father. He is very happy because the farmings here was very well. Fine. Okay. This year farming is very good. Suddenly, pray to God this doesn't happen. Suddenly, your father finished. Your father is no more. Then, who is going to be the owner of this? You. Right? You. You will be the owner of this big, huge landmass, right? This is called inheritance. Means you are inheriting your father's land in the absence of him. You are inheriting it by your rights. This is called inheritance. I hope this is clear to all of you. Now comes encapsulation, is the most easiest part, and after encapsulation we will jump on to programming. Now, encapsulation. What is encapsulation? Encapsulation means encapsulating both the data and function in one place. For example, what is your name? This name became the function variable. And what is the function name? Function is Aryan. Okay. This is the data.
This is the function, this is the data. Keeping it in one place or in fixed in a one place, this is called encapsulation. This is only called encapsulation. I hope this is clear to all of you guys. Okay, let me just now change my marker because we are going to jump on programmings. Okay, we are going to jump on programs. Let's go. So the first program in the world of Java was the first program of Java is Hello World. The first program of Java is Hello World. What is the program? Public class, give a class name like first underscore program, public static void main, another brace, system dot out dot println hello world with a colon. Band. So this is your first Java program. I hope this is clear to all of you. Now comes what is data types. Okay, this is the first Java program. You need not to copy this. You just have to know this one. Okay. Now what is data types and all? Just data types. First variables and constants. Variables and constants. So what are variables and constants? Variables are pockets and constants are the values or the filling of the pocket. For example, let me make a diagram for yours. You're just sitting like this. You're just standing or sitting like this. Now you're wearing a good shirt. You're wearing a pretty good shirt, and your shirt is like this, and you're having a pocket here. And in this pocket, you stole 10 rupees, rupees 10 from your mom. You stole rupees 10 from your mom, and you just kept it here in this pocket. That is what this pocket is the variable. Okay, this pocket is the variable. For example, int means integer, int x equals to 10. That means what? Int pocket equals to rupees 10. That means what? In your pocket, in this pocket, this pocket is your variable, and the thing what is your constant or what is your value is, this is the value. Okay, I hope this is this is understood by you guys. This is called variables and data types. Now comes data types. What is data types? Data types are some keywords. Data types are some keywords. Data types are some keywords which could be used for making codes or programs. For example, public, private, int, etc. There are several types of data types: mathematical data types, character data types, so on and so forth. Okay. Now the primary data types which we will be facing in our exams and in our programmings are: number one are mathematical data types. Mathematical data types like int for integer, double for decimal, float for a bigger decimal, that is the value is 3 billion, this is greater than 3 billion, int float double. Okay, and also for short, this for 2 billion, the range is 2 billion. For short, that is 30 million. I'm sorry, that is 0.5 billion, that is 15. And for short, that is 0.5 billion. Okay, this is the mathematical data types which we will be using. Now comes the character data types. Character means letters. Character data types or letters.
Characters and letters in Java, characters and letters both are same. So, character letter is char, ch or char, c equals to with a colon a. With a colon in the character, we use a colon, a single colon, single colon, just like apostrophe. We use a single colon, closed one, of course. We used to close it, and we close it with a semicolon. It is a single inverted comma. My apologies. This is a single inverted comma in character data types. We use single inverted commas, and every sort of data type and every statements are closed with this symbol. Not every, majority of the statements are closed with the semicolon symbol. I hope this is clear to all of you guys. Now we come upon with the printing statement, that what are the statements we can use. First statement we can use is public. What is public? Public is which is open to all, which is global. The technical word is which is global. Now you will ask, sir, what is global? Global means which is access, which is whose access is with everyone. Okay. And in this Java, this is called public. And what is called private? Private is which is not open to all. Which is not open to all. Okay. It is not open to all, and limited people have the access, and limited people have the access. ठीक है? Well, limited people have the access. I hope it is clear to you. Moving on. Limited people have the access. Limited people have the access. I hope this is clear to you all. Now, what is the printing statement in Java? You may ask, Bhaiya, what is the printing statement in Java? Printing statement. There is a unique printing statement in Java, that is system. The S should be capital. This S should be capital or in uppercase. In uppercase, system dot. This is a dot specifier, access specifier. I'm sorry. Then access specifier. System dot out. Dot out means output. It will show output. Dot print. ln. Print ln means it will be printing in the lines, okay, and it will not. It will be skipping lines. Means in this only one line, the printing will be there. In only one line, print with the parenthesis. This is not called first bracket in computer. This is called parenthesis. I hope this is clear to everyone. Moving on, that how to implement it in the Java program. So I hope that you guys are now comfortable with the variables and all. So let's do a program for adding two numbers. Let's make a program, or let's make a software of addition of two numbers. Two numbers. Okay. Then I will teach you how to input. Okay. Now only output will be there. Output will be taught here right now. After that I will teach you how to input, and then we will be moving to arrays and everything. In class 10th I guess array is there. So up to arrays and constructor, the lecture will be going on, which is suitable for 9th and 10th. And also basics for 11th and 12th, which is very basic for 11 and 12 ICSE and ISC. This for ICSE only, because the CBSE guys are doing Python there. They are also doing a very great job, which I will be teaching soon. Python I will be teaching soon, but still I am teaching Java. Java is very comfortable, because it is a very convenient yet very exclusive language, which is suitable for anywhere in the world you find.
Python is replaceable, but Java is irreplaceable. Moving on to the program of addition of two numbers. So, firstly, we write public. Let me hold the board. Okay. Firstly, we write public. This is my dream lecture, you know, guys. Public static public class first program आ गया public static void main system. No, let me take int. Now two numbers will be added, so add num first integer. We will take first pocket where the number will be there. The first int is number 1. First number which will be added is, let's say, 10. फिर से लेते हैं int another variable number 2 equals to, let's say, 5. Now system take another variable result of result or addition you may write. Addition is number 1 plus number 2 plus number 2. Okay, you are performing the addition here. Now you will be getting the result. Int result equals to addition. Okay, this is 10, this is 5. Both the variables here, 10 and 5, both the numbers are here. Addition is a pocket, another pocket, where what is stored, number 1 and number 2 are adding. This is the addition sign which we usually use in maths. These both are adding in this and coming, and this becomes this becomes this, and result equals to addition. Then we print it like system is always capital system dot out dot print ln. Now we will print the result plus, now we open the double quotes. Opening the double quotes ensures that we can show display a text. Then that result plus is the answer. Now I am closing this one, closing. Now you will be asking that Bhaiya or sir, that what would be the output of this? What would be the output? Let me show you the output. I hope this program is copied by you guys, right? Pause the video and copy the program, and the program and the notes of this class will be there in the description box. Make sure to visit the description box for sure and subscribe to Holidays with Aryan 11. And we are coming up with a new educational channel very soon. Give me a feedback after today, that how is the class. So the output will be result we are printing. So the output will be 15. Output will be number 1 was 10, number 2 plus 5 was 5 equals to, addition was going on, result will be printed. This will not be printed. The printed will be 15 is the addition. This one will be your output. Just run in your computers and you will see this output. This output will only be coming. If not coming, tell me. Okay. The method of addition, the same method of subtraction, the same method. This method goes with addition. This method goes with addition, multiplication, subtraction, division, modulus, everything. Now we come up that how to input from user, how to take input. Taking input. I hope this is not in class 9, so class 9 students may leave now. Taking input. Okay, but if you are interested, please stay with it. You can, you know that you can go through it, that how to input. So taking input is the most easiest way is calling the scanner class.
This class enables to input the user for multiple times. Input the user for multiple times. Let's do a program like this. So write a program in Java. I'm giving a question. You write. Write a program in Java to take two integers as input put, and show their addition, subtraction, multiplication, division, modulus. Okay. I hope that this board should be tied from the ground as well, from this the lower level also, because it is okay. Fine. Import Java. Now I'm calling the scanner class. Huh? Import means importing. Import expert, I guess you all know. So import Java dot util means utilization dot star, not dot star dot scanner, because we are taking scanner only. Scanner is only required here. Dot scanner. Okay. Quit out. नहीं. Let's go. Class. You can write public. You can't write public. That is upon you. It is all upon you. Can write private as well. Don't no worry. So you have to give there a base class. So class input. Let's say input. Hmm. Let's go. Not this big, small one. Public static void main. Now scanner. This is the main line, my dear. This is the main line. You will have to focus here only. Scanner SC is the object equals to new scanner. Here also system dot in. What is system dot in? System dot in means from the system we are inputting. From outside we are inputting something into the system. So there is system dot in. Okay. Now take two variables system. Let's give a then printing the display inputting output print and inputting text that print and that enter first number. Always give the variable name meaningful, like first number or number one, like this. But for the shortage of time, I am taking here a as a, but you don't take it as a. Equals to c. Sc dot next int. Next int. If you are taking int, then make sure you write int I capital. Int next int. Again sopln when system dot println. You will be writing system dot println. I am writing sopln. Enter second variable or second number. Again int b equals to sc dot next int. Okay, I hope this is clear to you all, right? Now do yourself that sopln. Yes, you can directly do it here. A plus b comma, not comma, a plus b space a into b space a by b space a minus b, and another one space, or plus, you can give plus here, plus a mod b. This is inputting a statement and doing the program. I hope it is clear to you all, guys.
Just understand the concept and apply the concept on the program. That's it. Java is very easy. Okay. Now moving to loops. What are loops and what is decision making statements and iteration statements? Let's move on to decision making and iteration statements. In the last class and in class 8 we all have learned that the flow charts and the decision box. So the decision making statements. Decision statements. What are decision statements? If, else. Plus if, अगर, else. तब. अगर, अगर, तब. যদি, তবে. इफ एल्स, अगर तब यदि तब. ठीक है, कोई बात नहीं. चलो, इफ एल्स एक ऐसा है कि इसमें अगर ये ऐसा है कि इफ टुडे इज मंडे आई विल बी ईटिंग चिकन. एल्स इफ चिकन इज नॉट अवेलेबल एल्स आई विल बी ईटिंग फिश. क्लियर. तो चलो, डिसीजन मेकिंग मतलब हाँ या ना, यस और नो. ऐसे डिसीजन मेकिंग एक वेरिएबल भी है जिसको बोले थे बुलियन. बुलियन इज इधर ट्रू, सही, और गलत, फॉल्स. ओके. इसके एक प्रोग्राम में होमवर्क में दे देता, होमवर्क नहीं, चलो कर लेते हैं. राइट अ प्रोग्राम इन जावा. चलो, डिसीजन मेकिंग से एक प्रोग्राम करते हैं, इटरेशन से एक प्रोग्राम करते हैं, कंस्ट्रक्टर करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे. ठीक है. डिसीजन मेकिंग कर लिए हम लोग. डिसीजन मेकिंग से एक प्रोग्राम करते हैं, इटरेशन करते हैं, इटरेशन से एक प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जाते हैं. कंस्ट्रक्टर, हाउ टू यूज़ अ कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर ख़त्म करके पूरा जावा क्लास 9-10 के लिए ख़त्म करते हैं. जावा बहुत ही यार सिंपल है. तुम लोगों से एक ही विनती है कि तुम लोग सिर्फ जुड़े रहो और इस सब कुछ প্র্যাকটিস করতে রহো. তোরা শুধু প্র্যাকটিস করতে থাকবি. কনসেপ্ট যা আবার লাগবে আবার বুঝিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই. ঠিক আছে. তো চলো, ডিসিশন মেকিং একটা প্রোগ্রাম বানানো যাক. সো রাইট আ প্রোগ্রাম ইন জাভা, write a program in Java to input, to check, ऐसा क्वेश्चन देगा, to check whether a person, man तो भी नहीं, person is eligible to give, to give vote for the upcoming elections. vote for elections मतलब क्या. आई गेस तुम्हारे सिविक्स में पढ़े हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसका मतलब अगर एज 18 से नीचे हुआ तो यू कांट गिव वोट. यू कांट गिव वोट अगर तुम 18 से नीचे हो. अगर तुम 18, अगर तुम एज इक्वल्स टू, अगर तुम एज इक्वल्स टू 18 हो और एज ग्रेटर देन 18 हो, फिर ही तुम you are approved for voting, or else you are not like this. You are minor. You are minor, actually. Minor. You are minor. Okay. चलो, ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं. बोर्ड थोड़ा छोटा है, 2-3 में दो बोर्ड भी बढ़ जाएगा तुम लोगों के लिए. सबको अटेंडेंस लगा देना, लाइक करके सबको अटेंडेंस लगा देना एक बार. प्रोग्राम बनाते हैं. इंपोर्ट, इधर सिर्फ एक ही इंपुट होगा. क्या इंपुट होगा? एज. जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार. स्टार क्यों सर? एस्टर बोलते हैं इसको. इसको बोला जाता है एस्टर, एस्टरिस्क. मैं इसको बचपन में एयर स्ट्राइक बोलता था. एस्टरिस्क. एस्टरिस्क क्या होता है कि इस सभी क्लासेस को, जैसे स्कैनर क्लास हो गया, लाइब्रेरी में जितना भी क्लास बैठा है, जावा डॉट लैंग हो गया, जावा डॉट स्कैनर हो गया, सब क्लास को अकेला इंपोर्ट करके लाता है. इसीलिए स्टार is the safest option to while writing a Java program. ठीक है. तो चलो, क्लास लिख लेते हैं. क्लास अपना एज लिमिट, ठीक है. हम लोगों को चेक करना है अगर कोई वोट दे पाएगा ये नहीं कि एक बंदा. पब्लिक स्टैटिक void main. Okay. Now comes scanner sc equals new scanner
सिस्टम डॉट इन। तुम लोग ठीक से लिखना, आई एम राइटिंग कैजुअली बट यू गाइज राइट सीरियसली, ओके। सिस्टम स्कैनर इक्वल्स स्कैनर एस सी इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। नाउ कम्स, नाउ अपना क्या हो गया, एज लिमिट, राइट। तो एक दे देते हैं सिस्टम, दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एज पूछ रहा है, एज कॉलन दे के स्पेस मार के मारना तो देखेगा अच्छा। तो अगर इसको एसओपी कर देना तो इधर इनपुट ले लेना, ठीक है। एज अगर इंट एज इक्वल्स टू, अभी ये जो इनपुट है ले लेगा जैसे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, खाली छोड़ देना पैरेंथेसिस। अभी इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ एज इज लेस देन 18 then my friend I am sorry next year, not this year, not this year। अगर if else छोटा हुआ, else SOP, इसके else क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, ज्यादा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन SOP yes you can give, क्या इलेक्शन, समझ में आया, अंडरस्टूड। हाँ बंद करना मत भूलना, 1 2, ठीक है, बंद हो गया, वेरी गुड। ई फेल्स वाला है, ठीक है, इसको डिसीजन मेकिंग बोला जाता है। इससे 15 नंबर का आएगा ही आएगा, 15 मार्क्स बोर्ड में आएगा ही आएगा, बोर्ड में या फाइनल पेपर में ही आएगा ही आएगा। जनवरी में तुम लोग का एग्जाम है, ठीक है। ये एकदम जावा इन वन शॉट है, एकदम वन शॉट वाला, एक गन शॉट वाला शॉट है, ये एक शॉट में खत्म। नेक्स्ट आता है हम लोगों का इटरेशन, मतलब लूपिंग, ठीक है। इटरेशन यानी लूपिंग, लूपिंग मतलब क्या, कोई भी गाना तुम लोगों को अगर अच्छा लगा तो तुम क्या उसको बार 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 सुनते हो, राइट, आइटरेशन, राइट। इसको ही बोला जाता है लूप्स। लूप्स कई प्रकार का होता है, लूप होता है तुम्हारा फॉर लूप होता है सबसे इजी वाला, तो तुम लोगों को जो यूज करना है, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप। 9 के पर्सपेक्टिव से फॉर लूप इंपॉर्टेंट है, 10 के पर्सपेक्टिव से वाइल लूप कभी कभी यूज करना होता है, कभी कभी यूज करना नहीं होता है। मैं सजेस्ट करूंगा फॉर लूप ही यूज करो, ठीक है। प्रोग्राम करते हैं, ऐसा एक पैटर्न बनाते हैं, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसा एक पैटर्न बनाओ, ऐसा एक पैटर्न बनाओ। देखो मैं बड़ा करके बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ड्रॉ दिस पैटर्न, ठीक है। लूप से ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और फिर लूप से और एक क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आता है, यही मेनली आता है, ये आता ही आता है। ऐसा एक पैटर्न बनाओ, इधर स्कैनर का कोई ज़रूरत नहीं, इधर स्कैनर का जो स्टार का किसी का कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बनाते हैं, ठीक है। मैं इसमें से लूप वाला पार्ट लिख रहा हूँ, बाकी तुम लोग पूरा लिखना कि पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग ARG, ये सब तुम लोग लिखना। मैं से लूप वाला पार्ट लिख देता हूँ। आई से लेके 1 से 5 तक था, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है। एक ब्रैकेट ओपन किए, फॉर जे, और एक वैल्यूबल ले लिए जे, जे इक्वल्स टू आई, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जे प्लस, ठीक है। अभी पहले में सिर्फ होगा SOP, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा, सिर्फ प्रिंट क्या होगा,
प्रिंट अगर 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा प्रिंट होगा तो सिर्फ जे प्रिंट होगा। अगर ऐसा प्रिंट होता कि 1 2 3 4 5 ऐसा प्रिंट होता तो मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसा होता तो आई प्रिंट होगा, तो फिर ये जे प्रिंट होगा। जे प्रिंट हुआ, बंद हुआ, एसओपी एलन। अभी एसओपी एलन क्या होगा, छोड़ देना, एसओपी एलन खाली छोड़ देना, ये पूरा एक बार में प्रिंट हो जाए जैसे। ठीक है सर, अब समझा दूं मैं, ये हो गया तुम्हारा इनिशियलाइजेशन। इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज मतलब वैल्यू डालना, वैल्यू इनिशियलाइज करना, वैल्यू इक्वल करना। इक्वल टू बोले ना जो एक्स इक्वल्स टू इतना, वही बोल रहा है। ये है रेंज, ये है रेंज, ठीक है। और ये है कितना दूर चलेगा, आइटरेशन। असली खेला इधर हो रहा है, आइटरेशन। ठीक है, इसमें सवाल भी दे देता है 5 नंबर का आउटपुट देंगे, एक सवाल दे देता है कि इफ, ऐसा सवाल दे देता है कि एक्स का वैल्यू है 5, ठीक है, निकालो y व्हेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड y where y equals to x plus 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 minus x minus minus x minus minus x plus 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 x, ऐसा दे देते हैं। बहुत सिंपल है। अगर प्लस रहा तो +1 होगा, अगर माइनस रहा तो -1 होगा। ठीक है, करते हैं। प्लस प्लस मतलब 6, प्लस माइनस माइनस है 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, प्लस x प्लस प्लस मतलब 6, प्लस 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 x कितना 6, कितना हो गया तुम लोगों का 10 16 20 16 22 22 इज योर आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, टीचर ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी मैं डीपीपी नीचे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में क्लिक करना, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, सॉल्व करना बैठ के, उसका मुझे फीडबैक देना कि तुम लोगों का ये हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि आइटरेशन हो गया तुम्हारा, अब हो गया कॉन्स्ट्रक्टर। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्स्ट्रक्टर तुम लोगों को कैसे समझा। हाँ, कॉन्स्ट्रक्टर बहुत ईजी है, सोचा। देखो, जैसे एवरेज बना देगा तुम लोगों का, एवरेज दे विल गिव यू जस्ट एवरेजेस, they will tell you that what is the, then they will give you the values and they will tell you that take the average using multitasking and ये सब एकदम कंफ्यूज होने का कोई, no need to confuse, just write the program. It will be a bigger one but it will be a easier one. See, write import java dot util dot star semicolon, then give the name class, then write average, then open the bracket, then write void কিছু না इनपुट, उसके बाद एसओपी एलएन सब कुछ इनपुट ले लेना। ऐसे एक वॉइड इनपुट होगा जिसमें सब कुछ इनपुट ले गए, इनपुट लेके एक पैरामीटराइज को नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में तुम लोगों को मैं अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो ये क्लास इधर ही खत्म होता है। आई होप তোমাদের लोगों को क्लास पसंद आएगा, তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তোমাদের নিজেদের কনসেপ্টগুলো। বি স্টে কানেক্টেড এবং ক্লাসের জন্য আর থ্যাংক ইউ। Thank you guys to join. Thank you.